पहली प्रॉब्लम लेते हैं ऑन हीट एक्सचेंजर्स। प्रॉब्लम पढ़िए। इट सेज a tubular heat exchanger is to be designed for cooling oil from a temperature of 80 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. So oil is getting cooled from a temperature of 80 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. ठीक है? By a large stream of water which may be assumed to remain at a constant temperature of 20 degrees Celsius. So the cold stream is stream of water, and because the amount of water is so large, or you can say the flow rate of water is so large that its temperature has not changed appreciably, we can assume the temperature to be constant. ये same scenario आपने condensers evaporators में देखा है. In that case, we know that the value of LMTD remains same whether you consider co-current configuration or counter current configuration. That is why मैंने बिना पूछे बिना कुछ बताए यहाँ पे क्या लिया है, co-current ले लिया. Okay, fine. The heat transfer surface consists of a 30 meter long tube of 20 meter dia. तो अगर एरिया की बात कर लूँ, we have a 30 meter long tube. सरफेस एरिया के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, so that is 2 pi RL और pi DL. एक्सटर्नल इंटरनल दोनों डायमीटर नहीं दे, ओनली इंटरनल डायमीटर इज गिवन, सो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, दैट शुड बी यूज्ड हियर. ओके, सो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, लिख दिया तो पाई एंड 20 mm डाया, राइट. सो 20 इंटू 10⁻³ और 30 मीटर लॉन्ग. ठीक है ना. पाई DL, दैट इज द एरिया. 2 pi R into L. Okay, that is the surface area. Let's calculate this value. It is 600, and 600 multiplied by pi, and that becomes 1.88495 meter square. Standard units. आगे पढ़ते हैं. The question says specific heat of the oil Cp is equal to 2.5 kilojoules per kg per Kelvin. Unit देखते चलो, right? And specific gravity means you can say rho is equal to 800 kg per meter cube. This is the rho of oil, and it flows through the tube with the average velocity V is equal to 50 meter per second. Velocity will be used to convert it into the mass flow rate. आपको क्या पूछा है? Calculate the overall heat transfer coefficient for this cooler. We have only one design equation, Q is equal to UA delta T LM. आप बोलोगे कि सर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के लिए वी हैव एक्सप्रेशन 1/HI प्लस 1/HO फॉर अ स्पेशल केस, अदरवाइज वो रेजिस्टेंस का जो पूरा एक्सप्रेशन है. बट यू कैन सी हियर कि ना आपको HI के बारे में कुछ बताया ना HO के बारे में बताया. Neither the conductivities are given, so of course I can't apply that relation. So I have only this option. Let us calculate delta T LM. 80 minus 20, so that is 60 minus 10 divided by log of 60 by 10. If you calculate this, this is log of 6, and 50 divided by this is 50 divided by log of 6. Correct? It is 27.90. That is logarithmic mean of temperature differences. अच्छा, डेल्टा टी एल एम की यूनिट होती है, यस और नो? यस, द सेम एज द टेम्परेचर, राइट. सो ए आई हैव, टी एल एम आई हैव, व्हाट अबाउट क्यू? क्यू इज मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी और डेल्टा टी एल एम. डेल्टा टी, दिस डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड फॉर विच द मास फ्लो रेट एंड सीपी यू आर यूजिंग. ऑफ कोर्स ये फ्लूइड आप नहीं ले सकते बिकॉज आप यू कांट अप्लाई दिस रिलेशन बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग. हीट ऐसा नहीं कि हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, बट इतनी क्वांटिटी लार्ज है कि आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी है ना, तो उसको इवोपरेट करने में, उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए दैट हीट इज नॉट सफिशिएंट. दिस स्ट्रीम में बी अ क्वाइट स्मॉलर स्ट्रीम एज कंपेयर टू दिस, राइट. सो एमसीपी डेल्टा टी, हाउ टू राइट एम? रो ए वी, दिस वी मस्ट बी एवरेज इफ यू वांट टू फाइंड द मास फ्लो रेट, सीपी एंड डेल टी. करेक्ट. डेंसिटी, let us put the values. 800. Area, this area is cross sectional area. This area and this area, they are not same. ये area अलग है, this is surface area, AS, please, AS, right? While this area is the cross sectional area which is
pi r square or pi d square by 4. So multiplied by pi, and d is 20 into 10 to the power minus 3, right? Okay, so 50 meter per second. Just a minute, I am checking the units in the question. Yeah, it is fine. Delta TLM is there, area is there, we have 30 meter long, 0.8, and it's flow through with a 50 meter per second. Okay, fine. Okay, not a problem, everything is fine here. So CP, and after this I have CP, right? What is CP? 2.5 into 2.5, correct? And then delta T. What is delta T? 80 minus 30, it is 50. MCP delta T, that is Q. Rho A. अच्छा, velocity मैंने नहीं लिखी. What is velocity? I have velocity as 50 meter per second. So this velocity should also be 50 meter per second. Right. So accordingly, if you find this value of Q, it will be equal to, let me do these calculations. 800 multiplied by 20 multiplied by 50, correct? Yeah. And this is okay, this is pi d square by 4, I'm sorry. This is pi d square by 4 into 50. ये velocity वाला 50 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? Calculations देख लो आप लोग. 20 square becomes 400. This is 10 to the power minus 6. Then becomes 100. So 800 multiplied by 100, right? That multiplied by 50. Again multiplied by 50 and multiplied by 2.5. Right? This divided by, okay, that multiplied by pi. Right? So that is the value of Q. This is coming out to be 1570796. Very high value. Okay. I also have 10 to the power minus 6. So let me do this also. 456. That is 1570. 1570.796. And what should be the units? It should be kilowatt. Because आपका CP की value kilojoules में थी. So the unit is kilowatt. Now I want to find the value of U. So U must be equal to this value of Q, which is this divided by surface area, right? Divided by 1.88495, right? And that divided by delta TLM, which is 27.90. It is coming out to be 29.86, right? It is coming out to be 29.86. What should be the unit? Kilowatt, right? Per meter square per degree Celsius. Whether you write Celsius or you write Kelvin, the value 29.868 should be same, right? You can check the calculations everywhere. I think I have not made any mistake here. That is the final answer. मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आंसर्स वगैरह चेक करके नहीं आता, unnecessary टाइम वेस्ट होगा, राइट? That is why sometimes you must have seen, almost in all the subjects, I have made some calculation mistakes. So that is natural, right? तो जितना natural है उतना आता है, ठीक है? कई बार आप उसको इग्नोर कर देते हो because you know that this is a kind of calculation mistake, right? So that was these kind of questions are there. Numerical problem आप देखो हीट एक्सचेंजर पे इसी तरह की है, बस वैल्यूज पुट करनी है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी इधर उधर कैलकुलेशन से ज्यादा नहीं है, राइट? सो आई एम गिविंग यू वन मोर प्रॉब्लम. ओके, सो द प्रॉब्लम इज ऑन द स्क्रीन. रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. इट सेज hot oil is to be cooled in a double pipe counter flow heat exchanger. The inner tube has 2 cm diameter. So first of all, it is counter flow, right? Double pipe में the inner tube means di has 2, that is the value of, it is having the value of 2 cm and negligible thickness. Okay, the inner dia of outer tube di is equal to, I hope you know the notations, I have used the same notations, 3 cm.
water flows through the tubes at 0.5 kg per second. Right, so mass flow rate of water is equal to 0.5 kg per second and mass flow rate of oil is equal to 0.8 kg per second. Okay, done. Now you have to find the overall heat transfer coefficient assuming turbulent flow. U overall I have to find. ठीक है, correct. आपने देखा कि this is a negligible thickness. Double pipe heat exchanger, negligible thickness means area, outer area, inner area, everything is same, right? So I think all of you remember that 1 by U can be written as 1 by HI plus 1 by HO, right? So correct. What is given here? Density of water, oil, all the data, viscosity, K, PR. I have not mentioned here the units, but I am telling you that the units were mentioned and all of them were standard units. तो कहीं कोई किसी तरह की conversion required नहीं थी. It is given that the Nusselt number for the annular fluid is 5.45. Correct. So, okay. They're also saying that assume turbulent flow. Turbulent flow hai, you know that for turbulent flow, which equation is valid, right? So, Nusselt number, Dittus-Boelter equation is valid. But the thing is, Nusselt number is already given, but it is given for annular fluid, right? Okay, right. You have to find HI plus HO. Correct? HI plus HO. Okay, so first of all, how to find HI? HI means for the tube side fluid. So let us write for the tube side fluid. भाई ये जो Nusselt number दिया है ये annular fluid के लिए, tube side fluid के लिए नहीं है. For the tube side fluid, what is the value of heat transfer coefficient? How to find? You know this correlation? HI multiplied by DI multiplied by K is equal to 0.023 multiplied by Reynolds number raised to the power 0.8, PR raised to the power 0.3. What is this? Dittus-Boelter correlation. Fine. So HI we have to find. Okay. DI 2 centimeters. Standard units कर लेते हैं. Divided by K. So inner कौन सा fluid हो रहा है? It is to be cooled, right? The inner tube has 2 centimeter dia, negligible thickness. Okay. Water flows through the tube. Okay. Oil through the shell. मतलब tube से water flow कर रहा है, so water की properties use करेंगे. What is the K of water? 0.637. Correct? HI into DI by K, that is equal to 0.023. Turbulent flow बता दिया, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे चेक करना पड़ता, वैसे भी रेनॉल्ड्स नंबर निकालना ही पड़ेगा. मल्टीप्लाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर. अब वो कैलकुलेशन आप एक बार कर लेना, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ. व्हाट इज द रेनॉल्ड्स नंबर फॉर वाटर? वेलोसिटी चाहिए होगी. ओके, मास फ्लो रेट इज गिवन. ओके, मास फ्लो रेट इज गिवन एंड यू हैव ओके विस्कोसिटी इज गिवन. फाइन. डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन, राइट. अब वेलोसिटी आपको निकालनी पड़ जाएगी इन दैट केस. Sorry, right? So rho into A into V, again the same thing, right? You'll have to find the value of viscosity in that case. Let's see. You can write this as rho velocity into for inner tube. What are the dimensions? Di, right? Divided by mu. Correct? You know that mass flow rate is equal to rho into A into velocity. So rho into V can be written as mass flow rate by area. ऐसा चलेगा ना? Just calculations avoid करने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, right? Raised to the power 0.8. And PR is Cp mu by K, specific heat, right? Specific heat. That is okay. PR की value आपको directly given है for the water, so no need to do that. So 3.91 raised to the power 0.3. Let's put the values. HI into 2 into 10 power minus 2 divided by 0.637 is equal to 0.023. इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं. Rho V is mass by area, right? What is mass flow rate? For water it is 0.5 into DI, which is 2 into 10 power minus 2. Rho V is M by A,
divided by mu, viscosity of water 0.602 into 10 power minus 4, and what is area? Pi d square by 4, right? Okay. Is equal to 0.023 and area is pi d square, 2 into 10 power minus 2 square by 4. लीजिए, ठीक है, दैट बिकम्स द रेनॉल्ड्स नंबर. करते हैं कैलकुलेट. आपको और किसी तरीके से रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है, आप वो भी कर सकते हो. रेस्ट टू द पावर 0.8 आएगा, उसके बाद पीआर भी आएगा. नॉट राइटिंग. ठीक है, चलिए. सो एक बार कैंसिल हो गया आपका ये टर्म. 4 goes in the numerator, so 4 into 0.5, that becomes 2, correct? And then I have here pi multiplied by 2 multiplied by 0.602 and then multiplied by 0, right? So that is the answer, and then 2 divided by this entire thing. Okay, and that raised to, this is 528,753 point something raised to the power, I'm writing the final answer, ठीक है, 37896.8. So that is 0.023, right, multiplied by 37896.8. That is the Reynolds number raised to the power 0.8. और PR का क्या है भाई? 3.91 raised to the power 0.3. And that is giving you 1.505 multiplied by 1.505. Correct? So 1.505 multiplied by 37896.8, that multiplied by 0.023 multiplied by 0.637, yeah, multiplied by 0.637, and that divided by HI is coming out to be, HI is equal to 41780.7. Right, what are the units? Watt or kilowatt? Depending upon the units of the other things. आप एक बार यूनिट चेक करो इसकी, क्या यूनिट आनी चाहिए. Right, that is the value of HI. Okay. It's kind of a lengthy calculation, बस आपको कॉन्सेप्ट्स देने के लिए कि किस तरह से चीजें कैलकुलेशन दी जाती है. आपको गेट में जो प्रॉब्लम्स आएंगी इतनी लेंदी नहीं आ सकती, राइट? हालांकि सिर्फ HI फाइंड करना इज नॉट लेंदी, बट अभी HO फाइंड करना है. HO फाइंड करने के लिए फिर बाकी कॉन्सेप्ट्स भी हैं. इसमें वी हैव टू फाइंड द शेल साइड इक्विवेलेंट डायमीटर, करेक्ट? ओके, सो दैट वाज द कैलकुलेशन ऑफ HI. आई होप थिंग्स वर क्लियर टू यू, राइट? सो इन डेटा को लिखे रहने देते हैं एंड लेट अस इरेज दिस मच ओनली. आई हैव द वैल्यू नाउ HI. आप भी कैलकुलेट करो. आई होप ज़्यादा थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, आने दो. राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनल आंसर. फॉर शेल साइड फ्लूइड द नसल नंबर इज गिवन एज 5.45. सो अच्छा, अब नसल नंबर दे दिया तो फिर इन सब प्रॉपर्टीज, ऑयल की प्रॉपर्टीज का कोई काम है क्या? देयर इज नो यूज. वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया भाई. द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल दे आर गिवन सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन अ कोरिलेशंस, राइट? Correlations are used to find the Nusselt number, but Nusselt number is directly provided to you. So just use is equal to HO into, अब क्या लिखूं? DI लिखूं, DO लिखूं? यही मैंने बताया था कि यहाँ पे ये DI नहीं आएगा. This is equivalent diameter, right? Divided by K. Now what is K? यहाँ पे K of oil का आपको यूज हो जाएगा. That is 0.138. So HO is equal to 5.45 into 0.138 डिवाइडेड बाय, अब ये भी बाकी है भाई, इक्विवेलेंट डायमीटर हीट ट्रांसफर के लिए. इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द इक्विवेलेंट डायमीटर फॉर हीट ट्रांसफर? दैट वाज द क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच वाज दिस 4 into pi by 4 di square माइनस में याद करने की कोशिश करो भाई, मुझे नहीं याद है, राइट? सो दैट वाज di square minus do square divided by do, right? क्रॉस सेक्शनल एरिया by wetted perimeter,
एंड वेटेड पेरीमीटर में से आपका पाई पाई कैंसिल हो गया था. ओके, सो DE इज इक्वल टू DI स्क्वायर माइनस DO स्क्वायर डिवाइडेड बाई DO. ये इक्विवेलेंट डायमीटर हीट ट्रांसफर की कैलकुलेशंस के लिए. हालांकि यहाँ पे कैपिटल DI एंड DO दे आर सेम, राइट. सो DI एंड, अच्छा आप बोलोगे कि सर आपको DO लिखा था या DI दिया है, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, इफ यू अंडरस्टैंड, राइट. सो ओके, सो व्हाट इज इक्विवेलेंट डायमीटर? DI स्क्वायर इज ओके, राइट, फाइन, ओके. Tell me one thing, if I write the units here in centimeter or I write the units here in meters, is it going to make any difference? Yes or no? Let's see. So DI is 3 into 10 power minus 2 whole square minus DO is 2 into 10 power minus 2 whole square, correct, divided by DO, which is 2 into 10 power minus 2. DI square minus DO square divided by DO. This equivalent diameter will be in meters, right. So that becomes 9 into 10 power minus 4 minus 4 into 10 power minus 4, that becomes 5 into 10 power minus 4, 5 into 10 power minus 4 divided by 2, so that becomes 2.5. 10 power minus 4, 10 power minus 2, that becomes plus 2, so 2.5 into 10 power minus 2. DE is equal to 2.5 into 10 power minus 2. Okay. So if you put this calculation here, 2.5 into 10 power minus 2, this becomes 5.45 multiplied by 0.138 is equal to this divided by 2.5 and then divided by 0.01. काफी कम आ गया. HO is equal to 30. ठीक है. अब मान लो आपने क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किया, HO is 30 and HI is 417.80.7. Of course, this is very high heat transfer coefficient. This is very low heat transfer coefficient. Correct? What do you think? Your U answer should be close to HO or should be close to HI? ये चीजें देखो क्वेश्चन करके ही सीखते हैं. Once you learn these things, try to make a rule from these things so that you can save some time during examination. In case there are some options. Options नहीं है तब तो कोई रास्ता नहीं है. ठीक है? So what is U? Right. Let me write here. I'm sorry. 1 by U is equal to 1 by 41780.7 plus 1 by 30. Sorry. 1 by 41780.7. भाई ये वैल्यू आ रही है 2 into 10 power minus 5. You can say, see, 2 into 2.39 into 10 power minus 5. This will become very small. And ultimately, 1 by U will be equal to 1 by 30. So, U is close to 30. आप सॉल्व कर लो एग्जैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं. कर चलो प्लस जस्ट मिनट 1 by this plus 1 divided by 30, right, that is answer, and reciprocal of this is 29.97. U is 29.9. You see yourself कि जो हीट ट्रांसफर स्मॉल था उसी स्मॉल, अगर काफी स्मॉल है तो इसी के आसपास का आंसर आएगा. 30 and 29.97, so close. That is the value of U. And units की भाई आप यूनिट्स इसमें देख लेना क्या यूनिट्स आनी चाहिए. One more thing कि यहाँ पे अगर आप इसको सेंटीमीटर्स में लेते, DI DO, आप बोलते सर सेंटीमीटर कट जाएगा, कहाँ कटेगा? आई थिंक दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर एंड देन दिस इज सेंटीमीटर, राइट. तो जो आपके कन्वर्जन्स हैं, ये कन्वर्जन्स आपके कटते नहीं कटते, एक बार चेक कर लेना इनको. ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे गलतियां होती है, जहाँ पे बंदा कंफ्यूज होता है. ठीक है, ये चीजें आप चेक करो खुद से. एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव लर्न, दैट U ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज क्लोज टू द स्मॉलर वैल्यूज. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सपोज इफ ऑलमोस्ट HI HO आर ऑलमोस्ट इक्वल, देन यू कैन से क्लोज टू HO क्लोज टू HI, डजंट मैटर. बट इफ HI HO आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, then U will be closer to the smaller values. That was a very good second problem which helps you to understand how to make use of these Dittus-Boelter equations, the equivalent diameter case and all those things. In a parallel flow heat exchanger, hot oil is entering at 70 kg per minute. Mass flow rate of hot stream is 70 kg per minute. ठीक. And the Cp of oil is 1800. Cph is equal to
1800. This is joule, right? So joule per kg per Kelvin. The inlet temperature of oil is 100 degrees Celsius and it is to be cooled by water at 30 degrees Celsius. Okay, so oil inlet parallel flow, right? Okay, so THN is 100 degrees Celsius and TC in is the water which is at 30 degrees Celsius. Correct, right? And the water flow rate MC dot is equal to 2 kg per second. The specific heat of water is not given, but you can always take the water specific heat to be 4.18 joule. It is kilojoule, right? So 4184 joule per kg per Kelvin, right? Then okay, it is given, Cp is given in the problem, it is 4200. So let's take 4200. Even water Cp is nowadays provided, तो क्या चाहिए आपको याद नहीं रखना है, okay? Find the maximum theoretical possible value of effectiveness. You have to find epsilon max. कि epsilon की maximum value क्या हो सकती है. डेटा को छोड़ो, मुझे बताओ, can the answer be equal to 1? Yes or no? This is an exchanger, heat exchanger given to you. MHCpH, MCCpC is known, right? Inlet temperatures are known, right? The question is asking to find epsilon max. Before solving anything, I am just asking one simple question. कि क्या epsilon max की value 1 हो सकती है? The answer is no. I told you that epsilon effectiveness is defined as the actual heat transfer by the maximum heat transfer which can take place in a heat exchanger. I told you that जो parallel का maximum है और जो counter flow arrangement का maximum है, the counter flow arrangement maximum is more than parallel maximum. ठीक है? So definitely, और उसी के basis पे effectiveness defined. So definitely, the effectiveness of a parallel flow heat exchanger can never be equal to 1. Even if you talk about the maximum, theoretically possible maximum value, still it cannot reach equal to 1. Correct? So, right. So the thing is कि अगर आपको effectiveness maximum चाहिए, it means अगर आप theoretically बात करो, it is possible if area is infinite. If area is infinite, और जब area infinite होता है तो होता क्या है? If area is infinite, you know, I have discussed that if in parallel flow, if area is infinite, what is the limiting case? That ultimately the leaving temperature of both the fluids will be same. Let us say that this is T temperature. ये temperature same हो जाएगा. Correct? So let us make the energy balance that 70 multiplied by, अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है 2 kg per second and 70 kg per minute. So ये कन्वर्जन आपको करनी होगी 70 by 60. 70 by 60 multiplied by 1800, that is MHCpH multiplied by 100 minus T is equal to 2 into 4200 multiplied by T minus 30. यहाँ से आपको ये T मिलेगा, right? Let us calculate this T. It is coming out to be 70 divided by 60 and that multiplied by 1800. 2100 into 100 minus T is equal to 8400 T minus 30. Correct? So what is the, this is okay, right? So 21 by 84 2520. From here the value is 2100 and this divided by it is coming out to be 44. This temperature T is coming out to be 44 degrees Celsius. अब आप बोलोगे आपने ये तो निकाल लिया. Now देखो ये जो केस हुआ, ये केस कब होगा?
when infinite area is available, then this will be the case. And this is the maximum possible heat transfer that can take place in this parallel flow heat exchanger. तो यहाँ से जो इफेक्टिवनेस निकल के आएगी वो भी मैक्सिमम इफेक्टिवनेस होगी. नाउ व्हाट इज इफेक्टिवनेस फॉर्मूला? अब आप बोलोगे कि सर कौन सा फॉर्मूला लगा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक व्हिच फ्लूइड इज मिनिमम. दिस इज प्रोडक्ट इज 2100, दिस इज 8400, मींस हॉट फ्लो रेट इज मिनिमम. सो यू विल डिफाइन एप्सिलॉन एच. ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मिनिमम होगा वही एप्सिलॉन डिफाइन करना. ये क्यों जरूरी है? बिकॉज सो दैट यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला इजिली, which was TH in minus TC in the denominator, and then because hot is minimum, so I'll write MHCpH here in the numerator also, MHCpH, which will be in that case TH in minus TH out, which is T in this case. So TH in is 100 minus 44 divided by 100 minus 30, correct? So 100 minus 44 divided by 100 minus 30. And this is 0.8. That is the maximum possible effectiveness. ये सारे काम करने के बजाय अगर आप ये देखो, what was the maximum possible value? What was the relation between effectiveness and NTU for parallel flow? Do you remember that relation? That relation can be used here. I think this was the relation. Epsilon is equal to 1 minus e raised to the power minus n into 1 plus c star divided by 1 plus c star, as far as I remember. If there is any corrections, you can do that, right? Okay, so if area is maximum, if area is infinite, NTU is also infinite, e raised to the power minus NTU will become almost 0. So epsilon will be 1 by 1 plus c star. What is c star? Minimum by maximum. So you can say 2100 divided by 8400, that is c star, right? 0.25 plus 1, that is 1.25. 1 divided by this is 0.8. यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल लो. This is the actual value of effectiveness. Sorry, for maximum possible effectiveness, I am considering that area of the heat exchanger is almost equal to, is very large actually, almost infinite, and therefore NT is also infinite. E raised to power minus infinity 0, 1 by 1 plus c star. That's done, right? So this is very good problem. इसमें कई बच्चे फंस जाएंगे, कर ही ना पाएंगे. I'll suggest you that कि अगर इसी क्वेश्चन को मैं काउंटर फ्लो में करूं और आपसे पूछूं कि what is the maximum possible effectiveness, same data, everything is same, क्या बताओगे आंसर? आंसर विल बी 1. यू कैन वेरीफाई ऑल्सो, यू कैन फाइंड द टेम्परेचर, क्योंकि देखो इफेक्टिवनेस को डिफाइन ही किया गया है उस हीट ट्रांसफर को लेके, दैट कैन बी अचीव्ड, द मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर दैट कैन बी अचीव्ड इन काउंटर. देखो हमें तो बस ये देखना है कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना हो सकता है, एंड वी नो दैट दैट इज पॉसिबल इन काउंटर फ्लो ओनली. सो फॉर काउंटर फ्लो द मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू 1, बट फॉर पैरेलल फ्लो द मैक्सिमम पॉसिबल इफेक्टिवनेस विल ऑलवेज बी लेस देन 1. राइट, सो अगेन दैट वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, एंड आप देख सकते हो कि ये सब बिना किए भी मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन यहाँ से निकाल सकता हूँ. ठीक है, सो दिस कैन बी ऑल्सो अ प्रॉब्लम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, that if there is no limitation to the area, what temperature the fluids will attain in parallel flow arrangement. And similarly, you can also find in counter flow arrangement what temperature the fluids will attain, right? So this was the third problem. Okay, right, now the 17th problem. Okay, what we have to find here: hot fluid entering a well-stirred vessel. There is a vessel which is well-stirred, right? This vessel is well-stirred. In this well-stirred vessel, hot fluid is entering, right? Which is cooled by feeding cold water through a jacket and the vessel. Okay, which is cooled by feeding cold water through a jacket. Okay. So there is a jacket, and in this jacket we have cold water, right? The cold water enters the jacket. This is cold water, correct? Right.
assume that the jacket is assume that the jacket is well mixed, fluid is also well stirred, the jacket is also well mixed. Just a sign to show that the jacket is well mixed, right? Okay, for the following data, calculate the heat transfer area in meter square. Inlet and exit temperatures of hot fluid is 150 and 100. So this is 150, and when it is exiting the reactor, it is, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन का आंसर हर जगह गलत दे रखा है, ठीक है। एंड कई बार मैंने देखा है, कई बार यूजुअली हर जगह ऐसा ही होता है, मैकेनिकल गाइज आर टीचिंग हीट ट्रांसफर एवरीवेयर, राइट, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, पता नहीं, मैंने कई बार देखा कि मिक्सिंग की बात को समझते नहीं कि मिक्सिंग होने का मतलब क्या होता है, राइट। मिक्सिंग लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी। हम लोग शुरू से, मैं आपको शुरू से हमेशा ही बताऊं, इट्स नॉट लाइक दिस इज अ थिंग विच इज रिलेटेड टू कोर केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ नहीं है। इवन इन मैकेनिकल वी रीड ऑल दीज थिंग्स, टर्बुलेंस, यूनिफॉर्मिटी, आप हर जगह देखते हो। हीट ट्रांसफर में मिक्सिंग लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी। इफ अ मिक्सचर इज वेल मिक्स्ड, इफ अ फ्लूइड इज वेल मिक्स्ड, this jacket is well mixed, what does it means? It means that well mixed का मतलब होता है uniformity, means there is uniformity in all the characterizing variables. Temperature हर जगह uniform है, temperature में कोई change ही नहीं है। So mixing leads to uniformity. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि देखो बाकी जो भी क्वेश्चंस है वही वैल्यूज वगैरह ही पुट करनी है आपको, किसी न किसी फॉर्मूले में आप कर लोगे। ये क्वेश्चंस लेके बार बार आ जाते हो कि सर मतलब पता नहीं वैसे किसने आपको बताया कि वो आंसर जो है वो गलत दिया, आई डोंट नो, बट आंसर गलत दिए हुए, ठीक है, इस क्वेश्चन के। इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द बुक्स निग्लेक्ट द थिंग विच इज गिवन हियर, दैट द जैकेट एंड द फ्लूइड्स आर वेल मिक्स्ड, राइट। ओके, so that is 100 degrees Celsius, and then it is given the inlet temperature of the cold water is 20 degrees Celsius. So it is available at 20 degrees Celsius. Correct? और क्या डेटा दिया हुआ है? Right. U is 500 watt per meter square. Mass flow rate of cold water is 0.5 kg per second. ठीक है? Right? Cold water mass flow rate MC dot is 0.5 or 4. It is 0.4 kg per second. Sorry, mass flow rate of water is 0.4 kg per second. Right? CP of oil is given to you. CP of water is given to you. Okay, nothing else. What do I have to find? I have to find this. Calculate the heat transfer area. Right, area I have to find. Okay. Right, so for area you have this expression Q is equal to UA delta TL, correct? Right, so first of all what is Q? आपको cold water का mass flow rate दिया हुआ है, right? So and we also have, we don't have the mass flow rate for this, right? What about this 150 hot fluid entering the vessel? Okay, fine. So this hot fluid is getting cooled. 150 CP of the hot fluid is also given to you, right? And CP of water is also. Let us apply then energy balance. Then this will be 0.4 multiplied by CP of water, which is 4184. Units are fine. No conversion is required. So MCP. Suppose the exit temperature of the cold water. Exit temperature. Cold water. Cold water out. Exit temperature of the cold water is let's say T, so minus 20 must be equal to, here the mass flow rate is not known to me, right, but the CP is known. What is CP? 6. It is 6 kilojoules, right? So that is 6000 MCP and then delta T. Actually the hot stream flow rate is also given in the problem, and that is equal to 0.25 kg per second. So I was missing this data. Otherwise आप of course temperature calculate नहीं कर पाएंगे, right? So 0.25, right? 6 kilojoules, so 6000 joules. Okay. After this, right, this is the hot one, right? So this should be 150 minus 100. Let us calculate the exit temperature now. Now the calculation says that this is equal to, this is 50 into 0.25 multiplied by
and multiplied by 50. That is 75,000, right? Okay, divided by the temperature is coming out to be T is equal to 64.81. Now here there is very important case that both the jacket and fluid is well mixed. All of you have studied the properties of CSTR. By mixing leads to uniformity, I told you, right? It means this 150 degrees Celsius liquid, hot fluid is entering the reactor, and the moment, because it is well stirred, right? Because it is well stirred, जैसे ही ये लिक्विड इस रिएक्टर के इस मिक्सर के अंदर आया, इसका टेम्परेचर चारों तरफ ड्यू टू परफेक्ट मिक्सिंग किसके बराबर हो गया? 100 के बराबर हो गया. तो इसकी प्रोफाइल मैं कुछ ऐसे बनाऊंगा, 150 एंड देयर आफ्टर 100. डोंट मेक द प्रोफाइल लाइक दिस, right? It's not 150 here, then 149 here, then 130 here, and then 100. It's not like this. It is perfectly mixed. So here it is 100 and everywhere it is 100 in fact. Similarly, the cold water jacket is well mixed. Jacket temperature was 64.81. This temperature 64.81. Correct? मतलब ये cold water अंदर जाते ही mixing की वजह से कितने पे आ गया? 64.81. So it should be 20 degrees Celsius and then 64.81. ठीक है, ये प्रोफाइल आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए. यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोफाइल, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर्स अलग अलग हैं. सो मैनी टाइम स्टूडेंट इस बारे में सोचता नहीं कि पैरेलल प्रोफाइल हो सकते, वो बस ऐसे बना देता है, राइट? सो आपने अगर नहीं सोचा है तो इस तरह की प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली. अब आपके डोमेन में ये चीज आ जानी चाहिए कि हाँ कभी ऐसा भी हुआ था. नाउ व्हाट इज द लोगरिथमिक मीन? देखो लोगरिथमिक मीन डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे. ऑल द टेम्परेचर डिफरेंसेस आर सेम, सो जस्ट टेक द टेम्परेचर डिफरेंस 100 minus 64.81 and that is 35.19. so delta T LM एरिया फाइंड करना था आपको, राइट? ये जो delta T LM होगा that will be nothing but 100 minus 64.81 which is 35.19. so area we can find Q की वैल्यू अभी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. द एरिया will be Q divided by U into A. U is 500 and then area we have to find that Q and delta T LM is 35.19, right? And what is Q? Anyone? This one? We can take any Q from here. So I think it was 75,000, 0.25 multiplied by 6,000 and then multiplied by 50. It was 75,000. Answer should be in meter squares. So that divided by 500 and then divided by 35.19. It is coming out to be 4.26 meter square. That should be your final answer, right? So okay, so don't ignore this well mixed information given in the problem. That is very important and it has to be utilized in the problem. इस प्रॉब्लम में ऑप्शंस थे और ऑप्शंस में आपके पास वो ऑप्शन भी था जो आप इसको इस तरह से अगर प्रोफाइल अज्यूम करते तो वहां से जो एरिया का आंसर आता वो ऑप्शन भी था, राइट? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. राइट, सो जस्ट अ मिनट. Problem number 5th in fact. Let me raise this part. You can read the question now on the screen. It says that water Cp is given at 80 degrees Celsius. Water at 80 degrees Celsius enters a counter flow heat exchanger with a mass flow rate of, so water enters a counter flow heat exchangers 80 degrees Celsius. Cp is given, mass flow rate is given, right, with a mass flow rate of 0.5 kg per second. So 0.5 kg per second, correct? Air Cp is equal to 1 kilojoule enters at 30 degrees Celsius. Airs enter at 30 degrees Celsius, correct? And having a mass flow rate of 2.09
kg per second, दोनों की CP आपको प्रोवाइड करा दी गई, ठीक है। If the effectiveness of heat exchanger is 0.8, then what is the value of LMTD, right? Effectiveness is given to you, that is 0.8, then what is the value of delta T LM? Okay. So CP is known, but you can see that in this particular problem, I have only two values of temperature. I told you that there is one class of problem which can be solved only by the method of effectiveness. This is that particular problem. आप इसको logarithmic mean की वैल्यू logarithmic mean के मेथड से फाइंड करोगे. In that case, I think hit and trial will be required. चलिए देखते हैं उधर hit and trial required होगा या नहीं होगा. अदरवाइज इससे पहले जितनी भी प्रॉब्लम कराई आप उसको NTU, LMTD किसी से भी कर सकते हो. राइट, सो व्हाट इज गिवन हियर, वाटर की CP दी है 80 डिग्री सेल्सियस, मास फ्लो रेट दे दिया, ओके, एयर की CP, इनलेट टेम्परेचर, ओके, इफेक्टिवनेस इज गिवन टू यू, ओके फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट, बिकॉज इफेक्टिवनेस की बात है तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दैट विच फ्लूइड इज मिनिमम. सो 0.5 into water CP which is 4.18, right? Yeah, 4.18 and 2.09 multiplied by 1. So this is 2.09, right? And what is this? 0.5 into 4.18, ये भी इतना ही आएगा, 4.18. So at 2.09 means both of them are having the same values of heat capacity rate. So आप किसी के भी टर्म्स में effectiveness define कर सकते हैं. So effectiveness is 0.8 means in the numerator maximum heat transferred, which is in this case actually the profile will be linear, क्योंकि अब मुझे पता है कि भाई MHCPH is equal to MCCPC, तो आप चाहो तो भाई linear profile भी बनाओ, है ना? Correct. You have to find delta TLM, right? Okay. So 0.8 is equal to THN minus TCN, correct, which is 80 minus 30, right? If you're writing THN minus, you can write THN minus TH out or TC out minus TCN, because आप effectiveness या किसी के भी terms में define कर सकते हो. I'm writing THN 80 minus TH out, ठीक है? From here you'll find the value of TH out. एक बार TH out मिल गया, then apply the energy balance, find this, find delta TLM. Okay, so let's do this calculation. This is 50 multiplied by 0.8, this is going to be 40, and TH out is 40 in that case, right? TH out is 80 minus 40, so TH out is 40, ठीक है? एक बार TH out 40 आ गया, then you can सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो भाई TH out 40 आ गया ना, MHCPH both of them is equal to MCCPC. I told you कि भाई यहाँ अगर 40 का चेंज आएगा तो यहाँ भी 40 का चेंज आएगा, ये कितना हो जाएगा 70, right? This will be 70, because if the heat capacity rates are same, both the fluid undergo same change. तो आप कुछ और कोई बैलेंस लगाने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस ही है actually, right? But we can solve it orally. Now what is delta TLM? This is 10. In fact, what is delta TLM here? भाई LM की यहाँ भाई लीनियर प्रोफाइल है ना, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये सारे वैल्यूज बराबर है. डेल्टा TLM इज इक्वल टू, ठीक है? ऐसे छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस आपके पास गेट में आते हैं इस तरह वाले. इससे पहले मैंने जो HIHO वाला क्वेश्चंस करा, दैट वाज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग. जो गेट में क्वेश्चंस फंसेंगे वो यहाँ फंस जाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आपको U नहीं दिया, A नहीं दिया, तो कैसे करोगे, कैसे फाइंड करने वाले हो, ठीक है? ओके, there can be some problems can be framed in such a way that they will be solved only by the method of this effectiveness, right? तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई effectiveness का मतलब definition मालूम होनी चाहिए. Now let us talk about this question which I am taking from GATE 2013. इससे पहले भी एक या दो क्वेश्चन गेट के लिए. This particular one is my favorite. Actually यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है काफी, बट स्टिल यहाँ बहुत मिस्टेक्स करके आए थे बच्चे. This was in 2013 when I gave my first gate, right? In the my final year actually. So in a double pipe heat exchanger, temperature profiles are shown. During operation, due to falling, the heat transfer rate reduced to half of the original value. Okay, assuming that the flow rate and the physical properties of the fluids do not change. Correct? The LMTD in the new situation is. अब यहाँ पे आपके पास जो options भी थे वो confusing थे. मैंने option नहीं दिए, options भी confusing थे.
डायग्राम भी दिख रहा होगा आपको, चेक द डायग्राम। कोई भाई क्वेश्चन में कोई डेटा तो था नहीं तो मैंने उसको हटा दिया। नाउ दिस इज द डायग्राम। इट इज गिवन टू यू दैट इन द ओल्ड सिचुएशन you have this, it is a counter flow arrangement, right? We have this at 100 degrees Celsius and then outlet at it is 60, I guess. Yeah, outlet at 60 and then 40 and 80. 100, 60 and 40, 80. Linear profile दी हुई है, ठीक है? This is 40, 80. सेम चेंज, मतलब यहाँ पे हीट कैपेसिटी रेट्स भी बराबर है, ठीक है? व्हाट इज डेल्टा TLM राइट नाउ? व्हाट इज डेल्टा TLM इफ आई आस्क यू? इट इज 20 राइट नाउ। डेल्टा TLM इज 20, है ना? बिकॉज डेल्टा TLM इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट आफ्टर ऑपरेशंस ड्यू टू फाउलिंग, ये क्वेश्चन पूरी हीट ट्रांसफर पढ़ा देने के बाद भी बच्चे लेके आते सर ये नहीं समझ आया, ठीक है? तो अगर आप समझते हो कि हाँ आपने समझ लिया भाई किस तरह से हीट एक्सचेंजर है, तो वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व करके देख लो एंड आप अपना आंसर नोट करके रखो कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है? सो आफ्टर ऑपरेशंस ड्यू टू फाउलिंग द हीट ट्रांसफर रेट रिड्यूसेस टू हाफ, ठीक है? हाफ हीट ट्रांसफर रेट हो गया आपका। आफ्टर फाउलिंग, आफ्टर ऑपरेशन Q न्यू इज इक्वल टू Q बाई और Q ओल्ड बाई 2। पहले जितना हीट ट्रांसफर रेट था अब उसका आधा हीट ट्रांसफर हो रहा है बस। इट इज वेरी ऑब्वियस दैट इफ हाफ हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस, अर्लियर सम हीट ट्रांसफर वाज टेकिंग प्लेस ड्यू टू व्हिच दिस लिक्विड, हॉट लिक्विड वाज गोइंग फ्रॉम 100 टू 60। भाई कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा था जिसकी वजह से इस हॉट लिक्विड में के टेम्परेचर में कितने का चेंज आ रहा था? 40 का चेंज आ रहा था, राइट? और इसमें भी 40 का चेंज आ रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि हीट कैपेसिटी रेट्स बराबर है। अब आधा हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ये जो चेंज होगा, चेंज में कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ऑब्वियस चीज है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है। सो इन द न्यू सिचुएशन फ्रॉम 100, भाई इनलेट, आप इनलेट चेंज नहीं कर सकते ना। फ्रॉम 100 इट वाज गोइंग अप टू 60, देयर वाज अ चेंज ऑफ 40, बट नाउ ओनली इट विल गो अप टू 80, देयर विल बी अ चेंज ऑफ 20 एंड फ्रॉम 40, राइट, फ्रॉम 40 इट वाज गोइंग अप टू 80 बट इट विल ओनली गो अप टू 60। देखो जादू, देखो कितने का डेल्टा TLM बन गया। न्यू डेल्टा TLM कितने का हो गया? 40। कुछ नहीं करना है इसमें, लेकिन आप वो UA डेल्टा TLM में फंसे रह जाओगे और फिर वहां पता नहीं क्या करके आओगे, ठीक है? तो अगर आप वहां से करके देखना चाहते हो तो कर लो। मैंने बहुत सीधा साधा इसमें फंडा बताया। अगर हीट ट्रांसफर रेट हाफ हो गया तो ये जो चेंज हो रहे थे भाई, दिस चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द इंडिविजुअल फ्लूइड्स इज अकरिंग ओनली ड्यू टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। इफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हैज बीन रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू बिफोर, देन डेफिनेटली आपका जो टेम्परेचर का चेंज आ रहा है वो टेम्परेचर का चेंज भी रिड्यूस हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? है ना? टेम्परेचर का चेंज आपका रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर टेम्परेचर का चेंज रिड्यूस हो गया है, इन दैट केस जो पहले 100 से 60 तक जा रहा था अब 100 से केवल 80 तक जाएगा, राइट? जो 40 से 80 जा रहा था वो 40 से 60 तक जाएगा। बस अब ये जो डिफरेंस है यहाँ पे 40 का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस, 40 का डिफरेंस, न्यू डेल्टा TLM इज 40। कई बच्चे इसमें आंसर फिर से 20 मार के आए थे, इसमें 20 वाज आल्सो देयर इन द ऑप्शन, 40 was there, right? And then cannot be determined was also one of the options. So these were some 6 selected problems on heat exchangers. मैंने और problems लेने की कोशिश सिर्फ इसलिए नहीं करी because in heat exchangers it is just formula putting. हाँ, there you may find some problems where there are shell and tube heat exchanger, then there is correction factor. अब correction factor का use बता दिया, अब उसके questions अलग से लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सो कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, कुछ मैंने भी कुछ 1-2 डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग टाइप के क्वेश्चंस लिए। दिस क्वेश्चन, देन HIHO क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा इक्विवेलेंट डायमीटर का आपको वहाँ पे यूज बता दिया, ठीक है? सो दैट इज सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग हीट एक्सचेंजर प्रॉब्लम्स। हीट की प्रॉब्लम्स में आपको उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिजाइन पार्ट एंड अबाउट द बेसिक्स ऑफ हीट एक्सचेंजर। नाउ वी विल डील विद द रेडिएशंस। अब चीजें बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। यू हैव रेडिएशंस, boiling and condensation and evaporation. All of them, boiling and condensation, just a theory, complete theory. There is no numerical problem. आप boiling and condensation से कोई numerical करने मत बैठ जाना, don't waste your time. These two things are totally based on empirical correlations और ऐसे correlations जो आप याद नहीं रख सकते। हाँ, condensation में there is a derivation, that is the only thing जहाँ से theoretical question बन सकते हैं, थोड़े छोटे मोटे numericals भी बन सकते हैं, बट वो जिसमें बड़े से कोरिलेशन है। और बॉइलिंग में तो सारे का सारा कोरिलेशन है, उस ग्राफ के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना।
सिमिलरली हाँ, इवापोरेशन में देयर कैन बी न्यूमेरिकल्स, इवापोरेशन को थोड़ा सा न्यूमेरिकली डील करेंगे, एंड देन देयर इज रेडिएशन. So evaporation, boiling and condensation quickly will finish, and same goes with radiation, because radiation is something in which even we don't have a lot of knowledge, right? मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि अभी रेडिएशन पे काम काफ़ी कुछ चल रहा है, we don't know much. तो गेट में क्या पूछेगा, वही बेसिक चीज़ें पूछेगा, वो बेसिक चीज़ें पढ़ लेंगे.